Hello friends, welcome to MALUKA IAS and today we are going to talk about the recently held summit और जिसमें पीएम मोदी ने बोला कि global south will lead the world now. Enough of global north. The global south will be going to lead the world. How it will be done? What is global south? What is global north? What are these new nominations by by PM Modi? We'll see in this video. So let's start with this discussion. Voice of Global South Summit, unity of voice, right? So it will drive the world's growth. Why? Why does PM Modi think कि global south जो है दुनिया की पूरी growth का जिम्मेदार बनेगा 21st century में? क्यों 19th और 20th century वाला global north जो है not any further it will develop, it will be a very important force in the development. क्यों बैठ के देखेंगे वो सारे बड़े countries? Because जब भी हम ग्रो करते हैं, देयर इज अ फेज, एक फेज आता है जहां पर आप स्टैग्नेंट हो जाते हो, आपकी ग्रोथ भी स्टैग्नेंट हो जाती है. जैसे कि बहुत सारी ग्रोथ आप कंट्रीज देखें, ग्रोन कंट्रीज, वहां की इकोनॉमीज हैव बिकम स्टैग्नेंट एंड सम ऑफ देम आर स्लोइंग डाउन. बट इंडिया, चाइना, all of these economies which were developing economies, they are growing at a very fast pace. The reason behind that is the demographic dividend, the right approach of the government, aspirational approach of the government and offensive approach of the government. जबकि जो ग्लोबल नॉर्थ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो क्या किस मोड पे आ गई हैं? डिफेंसिव मोड पे आ गई हैं. What they have, they want that to sustain, and they are not offensive about any kind of development, right? So human-centric development is an important priority. तो human-centric डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट इज एन इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी. अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज, अपनी एथिकल वैल्यूज के थ्रू ये सारी कंट्रीज जो कि ग्लोबल साउथ कहलाती हैं, ग्लोबल साउथ का जब मैं नाम लेता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी कंट्रीज इसमें आती हैं. ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज जितनी भी हैं. द समिट विल हेल्प G20 प्रेसिडेंसी टू रिफ्लेक्ट ऑन कॉमन इश्यूज affecting our economies, because all of these economies, BRICS, South Africa, Brazil, India, China, they are facing the same problems. They have a hell lot of population and they have a hell lot of they don't have enough resources to cater to that population. तो इसलिए क्या हो रहा है कि वो पॉपुलेशंस लगातार सफर कर रही हैं. तो ऐसी पॉलिसीज बनानी है, कोलैब करना है साथ मिलके कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फायदा पहुंचाया जा सके. और जितना ज्यादा इन ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मिलिट्री डेवलपमेंट उसी से होकर गुजरेगा, राइट? लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट नीड्स इंक्रीजिंग इनस्टेबिलिटी, एंड इंक्रीजिंग इनस्टेबिलिटी बोथ इन नेचुरल क्लाइमेट एंड जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट आर द कॉमन चैलेंजेस ऑफ दीज nations. ठीक है? It is also clear that developing countries are full of positive energy, even if they don't have natural resources, even if they are not gifted enough. There is a quote: America, children and drunkard have special providence from the God. अमेरिका को, ड्रंकर्ड को एंड चिल्ड्रन को स्पेशली प्रोवाइड करता है गॉड, राइट? तो गॉड इज नॉट प्रोवाइडिंग देम एनीमोर. गॉड हैज स्टॉप देयर सप्लाई. तो अभी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, बट उड़ने की इच्छा तो है, डिजायर तो है, एस्पिरेशन तो है, तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे. So they are full of energy and full of confidence. In 20th century, developed countries, the drivers of global economy, who were the drivers of the global economy, they are depressed. They are facing a lot of problems. ठीक है? Most of the advanced economies are slowing down, and global growth will be from the countries of the south. The world is facing a lasting crisis, and there is no clarity how long this state of instability will last. Prime Minister Modi ने बहुत ही clearly सारी चीजों को बोला. Whatever they feel, I don't care.
बट जो भी सच है उन्होंने बोला, द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ वुड ड्राइव द वर्ल्ड इकोनॉमी इन 21st सेंचुरी. मोस्ट ऑफ द ग्लोबल चैलेंजेस हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय द ग्लोबल साउथ बट दे अफेक्ट अस मोर. चाहे वो हैजार्डस सब्सटेंसेस का यूज हो, चाहे वो आर्म्स एंड एम्युनिशंस का यूज हो, टेररिज्म एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज प्रमोट करना हो, टेररिस्ट ग्रुप्स को फंड करना हो, ये सारी की सारी चीजें दे आर फंडेड बाय, दे आर स्पॉन्सर्ड बाय द ग्लोबल नॉर्थ. बट उसको फेस कौन कर रहा है? उसको फेस कर रहा है द ग्लोबल साउथ, डेवलपिंग कंट्रीज, राइट? So here is an announcement for all of you. We are coming up with a new course जहां पर आपको GS NCERT की क्लासेस, उसके अलावा एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है जिसमें कि आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी, एक मेंटोर प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि आपको पूरी प्रिपरेशन में मदद करेगा, आपकी पूरी प्रिपरेशन को आसान बनाएगा आपके लिए. एंड दिस प्रोग्राम इज अवेलेबल ओनली फॉर 21,499 रुपीज प्लस GST, विच यू कैन पे in 11 EMIs, राइट? तो इस तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं आपके लिए अफोर्डेबल बनाया जा रहा है. व्हाट इज ग्लोबल साउथ? ग्लोबल साउथ है क्या आखिरकार? तो ग्लोबल साउथ refers to the continents of Latin America, Asia, Africa and Oceania. Oceania consists of Australia and New Zealand. It is one of the family of phrases along with third world and periphery. They are also called periphery. They have been called for like a century the third world. The term global south denotes a shift away from primary focus on development or cultural difference and toward an emphasis on geopolitical power relation. कल्चरल डिफरेंस जो है उसको हटा करके एक जियोपॉलिटिकल पावरफुल रिलेशंस जो डेवलप करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी यूज्ड दिस वर्ड ग्लोबल साउथ. वी हैव बीन कॉल्ड पेरिफेरी, वी हैव बीन कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड बिकॉज वी वर नॉट रिच इनफ, वी वर नॉट डेवलप्ड इनफ. बट उसका क्या मतलब है? क्या हम रिच हो नहीं सकते? क्या हम डेवलप हो नहीं सकते? वी कैन इफ वी कोलैब बिकॉज आर जियोपॉलिटिकल पावर्स आर सेम. Our geopolitical situations are the same, right? With the end of the Cold War, the terms global north and south gained popularity in academic subjects such as international relations and all of that. North-south language offers an alternative to the concept of globalization. North refers to the countries like US, Canada, Europe, Russia, Australia and New Zealand. Global South includes countries in Asia, Africa and South America. This classification is more accurate as the countries share similarities in terms of wealth, indicators of education and healthcare. Less developed countries they are. Reason behind emergence of, they have not been involved in Cold Wars. They have not been involved in World Wars. Okay, in the post-Cold War world, the first, second and third world classification was no longer feasible. Most countries had no choice but to ally at some level with the capitalist US, the only remaining global superpower. Most of the global south share a history of colonization. The region has mostly remained underrepresented by international forums like UN Security Council. Challenges क्या हैं? Challenges ये हैं, despite developed countries' higher contribution towards global emissions, they are neglecting to pay for the pollution they caused. Russia-Ukraine war severely affected the least developed countries, aggravating the concerns related to food, energy and finance. China is increasingly making inroads the global south through the Belt and Road Initiative for developing the economic setup or the infrastructure. Right? तो क्या है? चाइना, इंडिया, ये सारी कंट्रीज किस तरीके से इसको मदद कर रही हैं ग्लोबल साउथ को, जिससे कि ये आगे बढ़ सके. ओवरऑल एज अ बॉडी ग्लोबल साउथ शुड वर्क टुगेदर, क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ का फेज हैज गॉन. नाउ दे आर स्लोइंग डाउन, दे आर स्टम्बलिंग डाउन, एंड विद देयर स्टम्बलिंग डाउन वी शुड नॉट स्टम्बल डाउन. हमें उन पर डिपेंडेंट होकर नहीं चलना है, हमें एक सेपरेट बॉडी फॉर्म करनी है. एंड द लीडरशिप, द टॉर्च बियरर इज आवर प्राइम मिनिस्टर. द वर्ल्ड इज नाउ कंसीडर्ड टू बी मल्टीपोलर. एवरीवन इज द लीडर, everyone is a leader. Industrialization has been skewed in the favor of advanced economies. Industrialization ने जो उनको मदद किया, पहले पाव पहले आओ पहले पाव वाले प्रिंसिपल ने, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस,
तो वो चीज अब दूर हो चुकी है. दीज लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज या जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनके फेवर में है ये स्क्यूनेस. अभी पेंडेमिक हैज exacerbated the existing divide. Not only have the countries faced different challenges in dealing with the initial phases of the pandemic, but the social and macroeconomic implications being faced today have been far worse than the global south. So global north is facing a lot of problems. India assumed the G20 presidency. India play an important role for establishing global south as an important body all over the world. If India can translate its ambition into effective policy, there will be no contradiction between the simultaneous pursuit of universal and particular goals. तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है आपके पेपर 2 के लिए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का क्या कॉन्सेप्ट है, पीएम मोदी ने क्या स्पीच दिया और उस स्पीच के क्या मायने हैं, राइट? तो ये GS 2 पार्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके नोट्स टेलीग्राम में अवेलेबल हैं. आप इसके नोट्स जरूर पढ़ लिया करिए, बिकॉज दैट विल वाइडन योर होराइजन. The need of the hour is that global south works or voices collectively for the larger good, for the larger concerns on existential threats from climate change, ecological devastation, inequalities and increasing militarization. This was our discussion for today for Global South. Thank you so much.